प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर के प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेकंड यूनिट के एक टॉपिक पर आधारित है। मैं डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेकंड यूनिट के टॉपिक्स मोरेरास थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी, लिवालियस थ्योरम को सम्मिलित किया गया है। मोरेरास थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी और लिवालियस थ्योरम पर डिस्कशन करने से पूर्व छात्रों के पास पूर्व ज्ञान के रूप में कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन होना आवश्यक है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन से विद्यार्थी पूर्व के व्याख्यान में परिचित हो चुके हैं। अतः इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक मोरेरास थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी और लिवालियस थ्योरम को बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम होंगे। इस व्याख्यान के अंत में विद्यार्थी मोरेरास थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी, लिवालियस थ्योरम को समझ पाने में सक्षम रहेंगे। सर्वप्रथम हम मोरेरास थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ fz is continuous in domain D and if for every closed contour C in the domain D, integral of C fz dz is 0, then prove that fz is analytic within D। प्रूफ में हम देखते हैं, suppose z0 be a fixed point and z is a variable point inside the domain D, then it is clear that the integral z0 to z fz dz is the independent of the curve joining z0 to z, and it is a function of upper limit z. So therefore we can write fz is equal to integral from z0 to z ft dt। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। Now choose z plus h be the neighboring point of z. Then we can write the equation similar to 1 as follows. It means fz plus h is equal to z integral from z0 to z plus h ft dt। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे।
Therefore, we get the result fz plus h minus fz is equal to integral from z0 to z plus h ft dt minus integral from z0 to z ft dt, or it can be written as z to z0 ft dt plus z0 to z plus h ft dt. हमें प्राप्त होगा fz plus h minus fz is equal to z2 integral from z to z plus h ft dt, या हम और सिंप्लीफाई करके जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात fz plus h minus fz upon h minus fz is equal to 1 upon h integral from z to z plus h ft dt minus fz upon h multiplied by h, या और सिंप्लीफाई करने पर हम राइट हैंड साइड को लिख पाएंगे 1 upon h within bracket integral from z to z plus h ft dt minus fz integral from z to z plus h dt, या और सिंप्लीफाई करने पर हम लिख पाएंगे in the left hand side fz plus h minus fz upon h minus fz is equal to, in the right side, 1 upon h within bracket integral from z to z plus h ft minus fz dt. अब हम दोनों पक्षों में मॉडुलस अप्लाई कर दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट मिलेगा मॉडुलस ऑफ द fz plus h minus fz upon h minus fz, and in the right side we get modulus of the 1 upon h within bracket integral from z to z plus h ft minus fz dt, और इसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ द सम is less or equal to sum of their moduli. It means right hand side can be written as less or equal to 1 upon mod h integral from z to z plus h modulus of ft minus fz mod dt. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे. Since ft is continuous at z in d, जैसा कि दिया हुआ है, so for a given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that we can write modulus of ft minus fz less than epsilon whenever mod t minus z less than delta for all t, mod ft minus fz less than epsilon को हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे. Now choose small r as small as. Small r को हम इतना छोटा चूज करें कि modulus of the h is less than delta हो. Therefore inequality 4 is satisfied for all point t on the line segment joining z to z plus h. Hence by equation number 3rd and 4 we can write modulus of the f z plus h minus fz upon h minus fz is less than epsilon upon mod h
इंटीग्रल फ्रॉम z to z plus h mod dt। राइट साइड को और सिंप्लीफाई करें, वी गेट द रिजल्ट in the right side epsilon upon mod h dot mod h is equal to epsilon. Thus finally we get modulus of the fz plus h minus fz upon h minus fz is less than epsilon. इसे equation number 5 देंगे। Since here epsilon is the arbitrary quantity, therefore from equation number 5 we get the result limit h tends to 0 fz plus h minus fz upon h is equal to fz। जिसे और सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा कैपिटल F डैश Z इज इक्वल टू fz फॉर ऑल z बिलोंग इन D। इसे इक्वेशन नंबर 6 दें। Hence we get the result capital Fz is analytic in D since derivative is exist, but also we have the derivative of an analytic function is also analytic. Therefore, f dash z is also analytic. So by equation number 6, we can say that fz is analytic inside D. नोट में हम देखते हैं in the view of Morera's theorem and Cauchy theorem, we can write as follows. If fz is continuous in a simply connected domain D and let C be any closed contour in the domain D, then necessary and sufficient condition for fz to be analytic in D is written as integral C fz dz is equal to 0. अब हम Cauchy इनक्वालिटी पर डिस्कशन करेंगे। Cauchy इनक्वालिटी का स्टेटमेंट है let fz be analytic in a domain D and let D contain the interior and the boundary of the circle gamma defined by mod z minus z0 is equal to rho if mod fz is less or equal to m on gamma. Then prove that the result modulus of the nth order derivative of the function at z is equal to z0 is less or equal to n factorial m upon rho power n. प्रूफ में हम देखते हैं we have from Cauchy integral formula for higher order derivative on circle gamma. Nth order derivative of the function at z0 is equal to n factorial upon 2 pi I integral gamma fz upon z minus z0 power n plus 1 dz। यह हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सर्किल गामा पर Cauchy इंटीग्रल फार्मूला से लिखा। Now taking modulus both side, therefore in the left hand side we get modulus of the nth order derivative of the function at z is equal to z0 is equal to in the right side modulus of the n factorial upon 2 pi I integral gamma fz upon z minus z0 power n plus 1 dz। जिसे और सिंप्लीफाई करने पर हमें राइट हैंड साइड की क्वांटिटी प्राप्त होगी लेस आर इक्वल टू n factorial upon 2 pi integral on gamma
mod fz upon mod z minus z0 power n plus 1 mod dz, जिसे हम पुनः सिंप्लीफाई करें अर्थात mod fz की वैल्यू लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम, जैसा कि थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है, को पुट अप करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। Since given that mod z minus z0 is equal to rho, therefore we can write z minus z0 is equal to rho e power I theta, or it can be written as dz is equal to rho I e power I theta d theta, or it can be written as mod dz is equal to rho d theta. Therefore, from equation number 1, we can write modulus of the nth order derivative at z0 is less or equal to n factorial capital M upon 2 pi integral from 0 to 2 pi rho upon rho power n plus 1 d theta, or it can be written as modulus of the nth order derivative of the function at z is equal to z0 less or equal to n factorial capital M upon 2 pi rho power n multiplied by 2 pi, या इसे पुनः सिंप्लीफाई कर हम लिख सकते हैं modulus of the nth order derivative of the function at z is equal to z0 less or equal to n factorial capital M upon rho power n, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। अब हम लिवालियस थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। लिवालियस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन fz इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ z एंड इज बाउंडेड देन fz इज कांस्टेंट। प्रूफ में हम देखेंगे, जैसा कि फिगर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, हमने एक लार्ज सर्किल C लिया जिसकी रेडियाई कैपिटल R है, सेंटर उसका ओरिजिन है, Z1 और Z2 दो पॉइंट सर्किल C के अंदर लिए, तो यहाँ कैपिटल C को हमने चूज किया एक क्लोज कॉन्टूर के रूप में, जो कि एक लार्ज सर्किल के रूप में है, हुज रेडियाई इज कैपिटल R, जिसका सेंटर ओरिजिन है। Z1 और Z2 दो पॉइंट हमने लिए इस सर्किल C में। Therefore we can write mod Z1 minus 0 is less than capital R and mod Z2 minus 0 is less than capital R, and when Z is the variable point, then equation of the circle is mod Z minus 0 is equal to capital R. Given that function fz is analytic for all finite value of z and it is bounded also, therefore there exists a positive constant gamma such that mod fz is less or equal to capital M for all z. इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। Hence by Cauchy integral formula we can write
for point Z1 and Z2 जैसा कि स्क्रीन पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 से प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात Z1 और Z2 पॉइंट के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा f(z1) is equal to 1/2 pi I इंटीग्रल ऑन C fz upon z minus z1 dz। इसे इक्वेशन नंबर 2 दें और fz2 is equal to 1/2 pi I इंटीग्रल ऑन C fz upon z minus z2 dz। इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। We can write fz1 minus fz2 is equal to 1/2 pi I integral on C within bracket fz upon z minus z1 minus fz upon z minus z2 dz. Now taking modulus both sides, then we get in the left hand side modulus of the fz1 minus fz2, and in the right hand side we get modulus of the 1/2 pi I integral C within bracket fz upon z minus z1 minus fz upon z minus z2 dz, or it can be written as in right side modulus of the 1/2 pi I integral on C z1 minus z2 fz upon z minus z1 multiplied by z minus z2 dz, or it can be written as in right side less or equal to mod z1 minus z2 upon 2 pi integral on C mod fz upon mod z minus z1 mod z minus z2 mod dz, जिसे और सिंप्लीफाई करने पर अर्थात इक्वेशन नंबर 1 से mod fz लेस आर इक्वल टू m का उपयोग करने पर हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित इक्वेशन प्राप्त होगा। अर्थात within left hand side modulus of the fz1 minus fz2, and within right hand side less or equal to capital M mod z1 minus z2 upon 2 pi integral on C 1 upon first factor is the mod z minus mod z1 and second factor is the mod z minus mod z2 multiplied by mod dz। इक्वेशन नंबर 4 देंगे। Since given that mod z minus 0 is equal to r, or it can be written as z minus 0 is equal to r ei e power I theta, or it can be written as dz is equal to r I e power I theta d theta, or it can be written as mod dz is equal to r d theta. Therefore, from equation number 4, we can write within left hand side mod fz1 minus fz2 less or equal to in the right side capital M mod z1 minus z2 capital R upon 2 pi integral from 0 to 2 pi 1 upon R minus mod z1 and R minus mod z2 d theta, जिसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित
रिजल्ट प्राप्त होगा। और सिंप्लीफाई करने पर हमें राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा कैपिटल M मॉड Z1 माइनस Z2 R इंटू 2 पाई अपॉन in denominator 2 pi r square within bracket 1 minus mod z1 upon r and within bracket 1 minus mod z2 upon r। जिसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होगा mod fz1 minus fz2 is less or equal to m mod z1 minus z2 upon r within bracket 1 minus mod z1 upon r and in the second bracket 1 minus mod z2 upon r, and the right hand side is tends to 0 when we choose r tends to infinity. Therefore, mod of fz1 minus fz2 is tends to r as capital R tends to infinity, and hence fz1 is equal to fz2 for all finite value of z, and therefore we can write fz is constant. So thus it's a Liouville's theorem. अब हम यहाँ पर विद्यार्थियों की सहायतार्थ स्क्रीन पर कुछ रेफरेंस बुक्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि इन बुक्स को गहराई से अध्ययन करें ताकि वो इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को गहराई से समझ पाने में सक्षम होंगे। स्वयं को एक्सेस करने के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। First is, if fz is continuous in domain D and if for every closed contour C in the domain D and integral C fz dz is 0, then prove that fz is analytic within D. Second question is, let fz be analytic in a domain D and let D contain the interior and the boundary of the circle gamma defined by mod z minus z0 is equal to rho. If mod fz less or equal to m on circle gamma, then prove that modulus of the nth order derivative of the function at z is equal to z0 less or equal to n factorial capital M upon rho power n. And third question is, if a function fz is analytic for all finite value of z and is bounded, then fz is constant. And at last, thank you for your attention.